Hello students, myself Sudhir Prasad Roy from DV Public School MDPS Kati. Today in this session of lecture, I am going to explain you the methods of factorization of algebraic identities of the form x square plus qx plus r. You might not get confused from this statement x square qx plus r. You may say that sir, we haven't seen such kind of algebraic expression, and then how can we able to do the factorization? This is very simple. You did not get confused. Just I am going to tell you with an example, explain everything so that you may not have any confusion at all. Just like see an example, x square factorize. Question is factorize x square plus 9x plus 18. See this expression. Is it based on this or not? Here x square is x square, maybe sometimes y square also, maybe sometimes p square also, maybe sometimes z square also. Whatever variable it may be, that doesn't matter. But whatever here, it will exist here also. Let us see x square, qx. And what is the value of q over here? We are just concentrate on this expression. Standard form of expression, it is x square plus qx plus r. What is the value of q over here? It is equal to, you may tell, 9, and plus r is equal to how much? 18. Okay, so we have understood this type of expression. Actually this is expression, it is not it is quadratic expression. We will discuss it in about this in next classes. Let us see, we have to make the factorization of x square plus 9x plus 18, that is of the form x square qx plus r. We will do this factorization by two methods. Okay, first method is that according to the identities you have studied so far in your class, in your syllabus. We will try our level best to make the factorization of such kind of identities, such kind of expressions on the basis of the method, whatever is given in your book, and you have studied about that, And the another method is that splitting the middle term method. Okay, which is which is not in your syllabus. It is of the syllabus of class 10, but I will explain that method also, so that you may use either of the methods on the based on your as per your convenience. Okay, so let us see the first method. Okay, let us see, this is x square plus 9x plus 18. Now recall a identity that you have studied here. Remember, x square plus a plus b into x plus a into b is equal to x plus a into x plus b. Do you remember or you have forgotten? You must be remembering. We had studied this to be identity 4. Okay, x square plus a plus b into x plus a into b. You have studied. Identity 4, perhaps identity number 4 was this. So, and I think that yes, it was identity. Yes, identity, whatever the identity may be, the identity was this only: x square plus a plus b into x plus a into b is equal to x plus a into x plus b. Now let us see, can we convert this expression on this pattern or not? Can we convert this expression on the pattern of this identity, that is LHS of this identity or no? LHS or RHS, whatever may be, कि हम इस आइडेंटिटी को इस आइडेंटिटी के पैटर्न के लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आइडेंटिटी है इसके पैटर्न के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, यानी इस पर हम इसको
रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम उस तरह से उस फॉर्म पे इसको बदल सकते हैं कि नहीं, चेंज कर सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। यू मे सी एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, लेट अस सी। तो इस केस में a प्लस बी इंटू एक्स, क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी एंड व्हाट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 9 है, ठीक है। यानी ये जो टर्म है 9 है, इसी को हमको a प्लस बी के रूप में लिख देना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, a प्लस बी होना, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या होना चाहिए, a प्लस बी होना चाहिए, और a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। 9x प्लस 18, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। इसलिए इस मिडिल टर्म को देखेंगे, इसको हम a प्लस बी में लिख सकते हैं, a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस देखेंगे कि 6 प्लस 3 9 होगा, और a इंटू बी भी होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो a प्लस बी डालेंगे तो ये इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। और a प्लस बी, ए और बी हम ऐसा नंबर खोजेंगे जिसको जोड़ेंगे तो ये 9 के बराबर हो जाए, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। ओके, what do we have such kind of numbers? Naturally you may have struck in your mind, and it will have 6 plus 3, क्योंकि 6 प्लस 3 9 होता है, तो 9 हो गया, और 6 गुना 3 क्या होता है, 18 होता है। 18 is there. So what we have seen, that this much identity, this much expression has come on the pattern of the LHS of this identity number 4. ये अब किस पैटर्न पे आ गया, एक्स स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस a इंटू बी पर आ गया। समझ में आया, हमने केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 9 को ऐसे कन्वर्ट किया, दो a प्लस बी के रूप में तोड़ा 9, कि जिसको जोड़ने पर 9 हो गया और मल्टीप्लाई करने पर 18 हो गया, दैट इज 6 प्लस 3। we will go through several such kind of examples, and so that you might get your concept very clear. So let us see, it is x square plus a plus b. So it is just equal to, just based on the pattern of the LHS of this identity, then it should be equal to RHS. It should be or not, LHS should be equal to RHS, and that is equal to x plus a into x plus b. So what will have here, x plus a, what is a, 6 into what is b, x plus 3, and it is the factor form. You see this into this, it is, this expression has been converted in the form of the product of two or more expressions. इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसी को फैक्टर कहते हैं। फैक्टराइजेशन का डिफिनेशन हमने पढ़ाया था, if an algebraic expression is written in the form of the product of two or more expression, है ना, this process is called factorization. So here ये जो expression था वह दो expression के product के रूप में लिखा गया, so ये factorization हो गया इसका। Any problem? No problem. Let us see some other example. Yes, so that you may not have any problem understanding. Let us see another question, x square minus 11x plus 30. Let us see another question, x square माइनस एक माइनस वाला दिखलाते हैं और फिर दोनों माइनस वाला दिखलाएंगे। हाँ, प्लस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, माइनस वाला में दिक्कत होगी, तो माइनस वाला हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, और गौर से आप देखेंगे तो यू मे अंडरस्टैंड एंड फैक्टराइज x square minus 11x and what is this, plus 30. Very good. Let us see now solution. Let us see x square minus 11x plus 30. Okay, x square तो x square है, ये q बराबर क्या है, -11 है, ठीक है। इसको हमें तोड़ना है, क्या करना है, हमें इसको a प्लस बी के रूप में लिखना है, ताकि a प्लस बी कितना हो, -11 हो, और गुना करेंगे तो कितना होगा,
प्लस 30 हो। सोचिए 11 कैसे होगा, 6 और 5 होगा, है ना। और 6 और 5 माइनस 6 और माइनस 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, तो 11 मिल गया। और -6 और -5 को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 30। सो वी हैव गॉट द फैक्टर 11 को हमने दो रूप में लिख दिया, a बराबर -6 एंड b बराबर -5। ठीक है, ये इसको हम तोड़ेंगे किसमें, a प्लस b के रूप में, ताकि a प्लस b हमने लिखा था ना यहाँ पे x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b इक्वल टू x प्लस a इंटू x प्लस b, ऐसा लिखा था, ये है। तो हम इसको a प्लस b के रूप में तोड़ेंगे, ये -11 को, ताकि उसको वह बराबर हो जाए -11 के, और उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, x²। अब यहां देखिए, चूंकि फार्मूला में आपको प्लस a प्लस b प्लस है, तो यहां पर हम प्लस लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा भाई, a के बदले में कितना लिखना पड़ेगा, -6, और फिर b के बदले में कितना लिखना पड़ेगा, -5, और इंटू x, और यहां पर क्या होगा, -6 इंटू -5। ठीक है, a इक्वल टू -6, ये a हो गया, और ये b हो गया, ये a हो गया, और ये b हो गया। नाउ इट हैज कम ऑन द पैटर्न x² प्लस a प्लस b इंटू a इंटू b, a इक्वल टू -6, b इक्वल टू -5। यहां पर हमने ऐसा क्यों लिखा, ये आप कर सकते हो सर, ये प्लस वगैरह का चक्कर क्या है, कुछ नहीं बेटा, इसको x, ये जो एक्चुअली जो पैटर्न है a प्लस बी के रूप में, प्लस a प्लस बी, इसी के लिए हमने किया, प्लस डाल दिया, और a प्लस बी, a को मैंने -6 माना तो प्लस -6 लिख दिया, और b को हमने -5 माना, -5 प्लस के साथ दे दिया, ये तो -6 ही रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम चीज है, इसको ऐसे -6 और -5। अब देखिए, नाउ यू हैव already convinced that it has come on the pattern x plus a into x plus b, and this is equal to x plus a, x plus a -6, और x plus b, x plus -5, and this will give you x plus -6 into x -5. No shortcut, don't resort shortcut methods, go through the proper method, okay, go through the proper method, and so by using the proper method you will come to a result without any hesitation, and you will get good marks. Let us see one more question for your understanding, that is let us see one more question, okay, and then I will give you the rest of the problems to do, and tomorrow in another lecture I will explain the other method. Let us see, x² - 4x - 45, x² - 4x - 45, ओके। अब तुम कहोगे भाई इसमें तो कहीं प्लस नहीं है, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, कहीं प्लस कहीं माइनस इसमें है ही नहीं, इसमें केवल माइनस माइनस है। तो यहां पर देखिए, हमको कंसंट्रेट करना है इस पर, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस, -4 इज देयर, we have to concentrate on -4, okay, and so that their sum should be equal to -4 and their product should be equal to -45. So what may be the result, think over it, कौन सा दो नंबर जो गुना करेंगे तो 45 आएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। 15 को 3 से गुना करेंगे 45 होगा, और 9 और 5, 15 गुना 3 करेंगे तो 15 - 3 करेंगे तो 11 आएगा, या 3 - 15 करेंगे तो कुछ भी और आ जाएगा। तो अब 9 और 5, 9 4 जा 45, और 9 और 5 में से माइनस करेंगे तो कुछ -4 आएगा, -4 या 4 कुछ आएगा, 9 में से 5 करेंगे तो +4 आएगा, और 4 में से 9 करेंगे तो -4 आएगा, ओके, इट्स ओके। सो and their product will give you 9 and -5, or 9 हो और -5 हो,
या -5 हो और 9 हो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -45 ही होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -45 ही होगा। ओके, तो ये सॉरी, ये अगर 9 हो और -5 हो तो प्रोडक्ट -45, -5 और 9 हो तो भी प्रोडक्ट -45। लेकिन हमको यहाँ पर लाना क्या है? -4 है, तो 9 -5 करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस, और -5 -9, सॉरी सेम थिंग इज रिटन, इधर होगा -9। और अगर हम -9 में से 5 को घटाते हैं, ये ऐड करते हैं, तो ये -4 आएगा। अगर हम 9 -5 करते हैं तो +4 आ जाएगा। 9 -5 करेंगे तो +4 आ जाएगा, और -9 + 5 करेंगे तो -4 आएगा। तो हमको यहाँ पर -4 लाना है, और लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ये 45 ही होगा। तो प्रोडक्ट के लिए -9 और 5 ठीक है, या 9 -5 ठीक है, लेकिन एडिशन के लिए जो यहाँ पर जोड़ना होगा उसके लिए क्या होगा? -9 + 5 ही होगा। और अब अंडरस्टूड? सो देयरफॉर यू मे सी x² प्लस लिख देंगे, और क्या लिखेंगे? -9 एंड +5 इंटू x प्लस -9 इंटू 5। ओके, आई अंडरस्टूड? x² प्लस -9 + 5, -9 में 5 घटाएंगे तो -4 होगा, -9 + 5 -4 होगा, जो हमको यहाँ चाहिए। यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए, और यहाँ पर -9 गुना 5 करेंगे तो -45 होगा। तो इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन सही हो जाता है, x² प्लस a प्लस b इंटू a इंटू बी। ओके, x² प्लस a प्लस b into x plus a into b, and so in this way we are going to have the factor that is x plus a. What is a? A is -9, so write in the bracket. Okay, put it like this, and now a plus b, x plus a into x plus b. What is x? X is -9, and what is b? It is 5. Sorry, x plus a, x plus, sorry, x plus b. What is b? It is 5. So we are having, what we have? X plus -9 into x plus 5. Okay, so in this session of this factorization, we have to consider, concentrate on the middle term, that is coefficient of x, y, z, something, whatever it may be. And now we have to factorize. We have to find the factors of the same given number, so that their sum should be equal to here. Okay, and their product should be equal to here. उसका जोड़ ये -4 के बराबर हो, चाहे जो भी और भी कोई नंबर दिया हो सकता है, देयर में भी सम अदर नंबर आल्सो, लेकिन उसका सम जो होना चाहिए वो -4 के बराबर होना चाहिए, यहाँ के बराबर होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? यहाँ के बराबर होना चाहिए। इस केस में हमने देखा कि वो फैक्टर क्या होगा? -9 और 5 होगा। -9 और 5 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, और गुणा करेंगे तो -45 होगा, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। Okay, dear students, so I think that you might have understood the methods. Let us have one more example of the same type for you to understand well, and after that I will end my lecture, and I will send you the questions on the snap one, and will expect the same, that you might have done all the questions on your own. Let us see one more example of the same type. X² minus 11x and -42. I will explain you the splitting of middle term later on tomorrow. Let us see factorize solution. X² minus 11x minus 42. What is a plus b? What should be a plus b? A plus b should be equal to -11. And what should be a into b? It should be equal to -42. देखो, a और b का यहाँ पर a plus b होता है, a प्लस बी होता है इंटू एक्स। ए प्लस बी क्या होना चाहिए भाई? -11 होना चाहिए, और a इंटू बी क्या होना चाहिए? -42 होना चाहिए। अब बताओ, यानी कि a प्लस बी क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए, और a इंटू बी क्या होना चाहिए? -42 होना चाहिए। तो 42 को आप लोग फैक्टराइज करो, कैसा नंबर होगा? तो 42 को जो फैक्टराइज करेंगे तो 11 + 3 आएगा।
minus 11, and minus 11 14, minus 14 sorry, and plus 3. अगर minus 14 plus 3 करते हैं तो क्या मिलेगा, minus 11 मिलेगा, and minus 14 into 3 करेंगे तो क्या बोलेगा, minus 42 मिलेगा. It means A is equal to how much, minus 14, and B is equal to how much, 3. So that A plus B is equal to minus 11 and A into B is equal to minus 42. So we have got the factors, and so we'll write like this, x square. We will use plus here, minus 11, sorry, x and plus minus 11 into x and plus 3. And 11, 9, 14, sorry, 14. Should be 14. And plus A into B, plus A is equal to minus 14 into 3. So now it is on the pattern x plus A B, A B. So we have come to know that it has come on the pattern of the identity, left hand side of the identity, this. इस आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड के पैटर्न पे आ गया कि should be equal to the right hand side of the pattern of this identity, and so you will have here x plus a. What should be x plus a, minus 14. इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, बेटे समझिएगा इसको गौर से, नहीं तो सावधानी बरतनी होगी while doing such questions. एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आप सावधानी पूर्वक बनाइए. Later on it will become your habit, and you will be doing the questions very fastly without committing any mistake. But in the beginning you should be slow but steady, and very consciously you will be doing the work in the beginning. After that, doing some of the problems, you will get yourself expertise. You will get expertise in this way, and you will be doing the questions very fastly. So it is x plus 3. Okay. And here we may have x minus 14 into x plus 3. So we have solved so many problems based on this identity factorization, and I expect that you might be able to do the rest questions also. And your problems, your queries are always welcomed on my WhatsApp number and on my telephone. And with this lecture, I am going to stop my lecture, and I will send you the assignment of worksheet 7 on your snap work. With this word, I am going to stop my lecture. Thank you. Have a nice day. Okay.